हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आसाम स्लेट 2021 टू 22 नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए दोस्तों इकोनॉमिक सिलेबस के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न को भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर दो पेपर है दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2। दोस्तों यहाँ पर देखो, पेपर 1 में क्या क्या है। सब्जेक्ट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर देखो, द टेस्ट इज इंटेंड टू असेस द टीचिंग or research aptitude of the candidates. They are supposed to possess and exhibit cognitive abilities like comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, evaluating and distinguishing deductive and inductive reasoning, weighing the evidence with special reference to analogical arguments and inductive generalization, evaluating classification and definition, avoiding logical inconsistency arising out of failure to see logical relevance due to ambiguity and vagueness in language. The candidates are also supposed to have a general acquaintance with the nature of a concept, meaning and criteria of truth and source of knowledge. दोस्तों, यहाँ पर जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर कॉम्प्रेंशन आ सकता है, एनालिसिस आ सकता है, एवोल्यूशन आ सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ये रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग टाइप। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, देयर विल बी 50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1। दोस्तों पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस है यहाँ पर। और देखो दोस्तों, नेक्स्ट देखो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में देखो, पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स 100। मतलब 1 क्वेश्चन में 2 नंबर्स और ड्यूरेशन 1 आवर। और पेपर 2 में देखो दोस्तों, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स। 1 क्वेश्चन में 2 मार्क्स और टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स। और यहाँ पर देखो दोस्तों, कैंडिडेट्स हु appear in 2 papers and secure at least 40% aggregate marks for candidates belonging to general category and at least 35% aggregate marks for candidates belonging to reserved categories will be declared qualified for eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government। दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों 35% मार्क्स चाहिए। और द सिलेबस ऑफ पेपर 1 एंड 2 विल रिमेन द सेम। दोस्तों यहाँ पर देखो, पेपर 1 जो है दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये पेपर 1 जो है, ये पेपर 1 सेम ही रहेगा दोस्तों। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो व इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का है या फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट का है, जो भी हो, फिर भी पेपर 1 सेम ही रहेगा। इसके बाद देखो दोस्तों, पेपर 2 स्लेट कमीशन आसाम नॉर्थ ईस्ट रीजन, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, कोड नंग 03। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट कोड 03। और यूनिट 1 में देखो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा सब हेडिंग्स है। यहाँ पर देखो, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, market structures, competitive and non-competitive equilibrium and their efficiency properties, factor pricing, general equilibrium analysis, और
efficiency criteria, Pareto optimality, Calder, Hicks and wealth maximization, or welfare economics, fundamental theorems, social welfare function, or asymmetric information, adverse selection and moral hazard. और यूनिट 2 में दोस्तों यहाँ पर देखो यूनिट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो दोस्तों नेशनल इनकम concepts and measurement, determination of output and employment, classical and Keynesian approach, consumption function, investment function, multiplier and accelerator, demand for money, supply of money, ISLM model approach, inflation and Phillips curve analysis. यह है दोस्तों यूनिट 2 और यूनिट 2 के अंदर और भी बाकी है यहाँ पर देखो syllabus, business cycles, monetary and fiscal policy, rational expectation, hypothesis and its critique. और यूनिट 3 दोस्तों देखो statistics and econometrics. यहाँ पर probability theory, concepts of probability distributions, moments, central limit theorem. और descriptive statistics यहाँ पर measures of central tendency and disparitions, correlation, index numbers, sampling methods and sampling distribution. और statistical inferences, hypothesis testing और linear regression models and their properties. और blue or identification problem or simultaneous equation models, recursive and non-recursive, discrete choice models, time series analysis. यूनिट 4 यहाँ पर देखो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पर सेट्स, फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज और डिफरेंशियल कैलकुलस and its applications, linear algebra, matrix, vector spaces, or static optimization problems and their applications, input-output model, linear programming, difference and differential equations with applications. और यूनिट 5 यहाँ पर देखो दोस्तों इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यहाँ पर international trade, basic concepts and analytical tools, theories of international trade under imperfect competitions, balance of payments, composition, equilibrium and disequilibrium and adjustment mechanisms, or exchange rate concepts and theories, foreign exchange market and arbitrage, or gains from trade, terms of trade multiplier, tariff and non-tariff barriers to trade, dumping, GATT, WTO and regional trade blockers, trade policy issues, IMF, that means International Monetary Fund and World Bank. और यूनिट 6 देखो दोस्तों यहाँ पर पब्लिक इकोनॉमिक्स यहाँ पर मार्केट फेल्यूर एंड remedial measures, asymmetric information, public goods externality or regulation of market, collusion and consumers welfare, or public revenue यहाँ पर tax and non-tax revenue, direct and indirect tax, progressive and non-progressive taxation, incidents and effects of taxation, or public expenditure, public debt and its management, public budget and budget multiplier, and fiscal policy and its implications,
और यूनिट 7 दोस्तों यहाँ पर देखो मनी एंड बैंकिंग, यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई और सेंट्रल बैंक, commercial bank, instruments and working of monetary policy, non-banking financial institutions, capital market and its regulation। और यूनिट 8 दोस्तों यहाँ पर देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, Schumpeter, Rostow, balance and unbalanced growth, big first approach और models of economic growth, यहाँ पर हैराट, टोमार, सोलो, रॉबिन्सन, काल्डर और technical progress, यहाँ पर disembody and embody endogenous growth और indicators of economic development, यहाँ पर poly SDI, SDGs, etc. और यहाँ पर poverty and inequalities, concepts and measurement, social sector development, health, education, gender। यह है यूनिट 8। और इसके बाद यूनिट 9, यहाँ पर देखो environmental economics and demography, यहाँ पर environment as a public good, market failure, cost theorem, cost benefit analysis and compensation criteria, valuation of environmental goods, theories of population, concepts and measures, fertility, mobility, mortality, S structure, demographic dividend और life table और migration। यह दोस्तों यूनिट 9। यूनिट 10, यहाँ पर यूनिट 10 देखो दोस्तों इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस और इंडस्ट्री, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस और सर्विसेज, यहाँ पर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेस और रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पर इश्यूज, challenges and policy responses, urban development issues, challenges and policy responses or foreign trade, structure and direction, balance of payment, flow of foreign capital, trade policies, infrastructure development, physical and social, public-private partnership, reforms in land, labor and capital markets, central state financial relations and finance commissions of India, FRBM और poverty, inequality and unemployment। दोस्तों ये है यूनिट 10। दोस्तों ये है आसाम स्लेट 2021 to 22 के सिलेबस। दोस्तों आज का वीडियो बस यही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।